photoelectric effect. Photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसे फेनोमेना जो हमें इस बात का प्रूफ देती है कि लाइट इज अ वेव नेचर, सॉरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं और हमें फोटोइलेक्ट्रिक पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ लाइट. Firstly we will discuss before we will discuss photoelectric Hello student, now today we will discuss about the photoelectric effect. तो photoelectric effect. Now when talk about the photoelectric effect, then we thought about what is the photoelectric effect and how we need to study the photoelectric effect. Then I tell about what is the photoelectric effect and how we study about photoelectric effect. Then in short, I can say that the photoelectric effect tells about the nature of light is particle nature. तो क्या इसके पहले जो भी फेनोमेना हमने पढ़ा है तो वो पार्टिकल नेचर नहीं शो करता? तो आंसर इज नो. इसके पहले जो भी हमने फेनोमेना पढ़ा है, लाइक हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा, लाइक हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा, ये जो फेनोमेना हमने पढ़ा है वो जितनी भी हमने फेनोमेना पढ़ी है ऑल अबाउट द लाइट नेचर ऑफ द वेव. It means कि light have a wave nature, but this is the first phenomena which tells about the particle nature of light. Then what happened when we considered as the light is a wave? क्या अगर हम लोग लाइट को वेव कंसिडर करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना करेंगे तो क्या हमें वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो नहीं होगा? नहीं, आंसर है नहीं. अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है और उस बेसिस पर ये अगर हम लोग प्रूफ करते हैं देन इट विल बी एक्सप्लेन वेल. बट अगर हम लोग वही इस बात को कंसिडर कर ले कि लाइट हैव अ वेव नेचर एंड देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, देयर इज टोटली फेल्यूर. तो बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग वेव नेचर को कंसिडर करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमें शो नहीं करेगा. तो बात कर लेते हैं फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर लाइट को कंसिडर करते हैं कि लाइट इज वेव, देन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अगर हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, when intensity is increases then what happen? क्योंकि वेव नेचर है तो वेव नेचर का मीनिंग हुआ कि वेव नेचर मीन्स द लाइट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. बट when we incident on a light on a metal surface, then it will be emit electrons, and when we increase the intensity of light, there will be assumed that the electric field and magnetic field also, magnetic field have the amplitude and their amplitude or increases, but there is nothing
like that when we considered as the wave, because the photoelectric effect is totally depend on the frequency, not depends on the intensity of light. Even there is nothing to seen that the amplitude of the electric field and amplitude of magnetic field increases, and as well as it is considered as when the intensity or increases, then the kinetic energy of electron also increases, but there is no such as result the electron have not increase electric field. It means it feels that the wave nature of light. This is one reason we considered as the light have a particle nature. Okay, now we will discuss a second failure. There is a second there is a second reason. What is the second reason to we considered as the light have a particle nature, or wave nature? Now second thing is the when we consider the wave nature, there is a there is a there is a there is a assume that the electron ejected when we incident of light and metal surface, then electron is interact with light and ejected from the metal surface. But wave nature considered as the when the light incident on metal surface and then electron are ejected, there is a time lag. There is time lag between 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 the interaction and ejection of electron. But when we considered when do we consider the light have the particle nature, there is no such as time lag. When the light is incident on metal surface, simultaneously electron are emitted with the metal surface. And third one reason is the failure of electric. There is a consideration of electron have the kinetic energy, and if there is a consider as a electron have kinetic energy because they are moving with the metal surface, ejection of the metal surface, then it must be, we can say that they have the kinetic energy, and it is considered as the when we when the light incident on the metal surface, they are evenly distributed the kinetic energy on the metal surface. It means it will be sees that the every electron have equal amount of kinetic energy. But in modern physics, or we can say that in the quantum physics, there is no such as consideration that is the every electron have equal kinetic energy, but there is a consideration that when the electron at the surface of metal, they have the maximum kinetic energy, and some electrons are the lower surface of the metal surface, then they have the lower kinetic energy, because when electrons are come to the metal surface, then they have the some collision between the electrons, and they are losing lose their kinetic energy, and they have the low kinetic energy. This is the three main reason to failure the considered as the wave is a wave photoelectric effect phenomena is the wave nature. Then after some time, this is considered as the light have a particle nature, and it is considered as the light have a quanta. It is considered as a light have the quanta uh, energy. Light have a quanta energy. It is considered as light have a quanta energy. It is considered as it is considered as light have quanta
It is called as photons. Called as photons. The photons, what is the photons? The photons is a amount of energy in the form of quanta. Photons is the energy in the form of the bundles, in the form of the packets of bundles. So photon is the, what is the photons? Photons is the energy in the form of the bundles. This is called as a photon and also called as the quanta. Okay, it, who gave the quanta concept? Planck constant. Planck, scientist Planck give the concept, the Planck. And when we considered as the light have the particle nature, it is assumed that the light have the photons in the energy in the form of the in the form of the bundles. Okay. This is the sum. Then what is the photoelectric effect? Then photoelectric effect, this is the metal surface and there is some electrons, and when this is the cathode plate, this is the anode plate, this is the anode plate, and there is the shut-up. This is the negative potential, this is the positive potential. High tension batteries connected. There is what, cathode, anodes, positive, negative, and there is evacuated chamber. When we fall the ultraviolet rays, when we incident the ultraviolet rays in evacuated chamber and the cathode place, there is ejection of some electrons and which will be attracted by the anode plates. And when the electron are moving continuously, there is a flow of current. Here is a microammeter as attached. Directly flow of current. When the electrons are moving, there is a flow of current in the circuit. Okay, this process will be continuous sometimes. And next we can say that when we incident on the metal surface, we can say that we can see that before it will be observed that if this some light if the some light incident on the metal surface, there is no ejection. Initially the random frequency incident on the metal surface, there is no such electron ejection. Why it is? Because the ejection of electron, there is a requirement of a minimum quantity of energy. This is called the work function. The work function means when the suitable amount of frequency incident on the cathode plate, then there is a ejection of electron from the metal surface and moving of electrons and attracting, we can say that the attraction of electron by the anode plates. Okay, and when the moving of electron, there is a flowing of current. Now we can say that there is a stopping potential. I will discuss it, what is the stopping potential, and there is a frequency. It will cease that some amount of frequency, let's see 1 hertz, 2 hertz, 3 hertz and 4 hertz. Let see that the 5 hertz frequency is required to ejection of electron. This 5 hertz frequency is called at the work function, and there is a, when we draw its backside, we obtained here a work function. There is an equation of Einstein equation. It is called the Einstein equation. What is the Einstein equation? Einstein gives about the relation between the kinetic energy. The photon have the energy h nu. H nu plus work function.
total energy is equals to kinetic energy plus work function. Then there is a how many kinetic energy? Then kinetic energy is equals to E minus work function. Then there is a E V naught. E V naught is equals to H nu minus H nu naught. Then the potential V is equals to H upon E nu minus H upon E nu naught. It means we can say that y is equals to mx plus c. Then slope of the graph is h upon e. Slope of the graph is equals to h upon e. It means the slope graph is this. And now we will discuss about some terms here. Stopping potential. Stopping potential. When we doing this process, incident on the when we're doing this process, the incident of the light on the cathode rays, and electron is moving and current is obtained, then we can do it reverse. It means we can decreasing the potential of anode and increasing the potential of cathode. We observe that there is movement of electron is going slow down. Moving of electron is going slow down, and after some time we observe that there is no such electrons moving. Even when which electron have maximum kinetic energy, that electron also can't move, because the potential of anode plate is maximum. That's why the repulsion between the electrons and anode's plates are maximum. Then that's why is the electron having the maximum kinetic energy no further move. Then at that point there is no flow of current. There is no flow of such currents. It is called, at this condition, the potential of this circuit, at this condition the potential of this circuit is called as the stopping potential. Okay, now we will discuss about the some graphs between what happen if the intensity. First of all, we will tell about the intensity of light does not responsible for the ejection of electron. Why? Because intensity of electron have no power to ejection of electron. It will require a minimum amount of frequency that is eject the electron. What happen if the frequency of light is doing constant and varying the intensity? And what happen if the intensity is doing constant and varying the frequency? Let's see the graph here. Here the potential, let's say V naught, and here the current, photo current. Now when frequency when the frequency is constant, when do the frequency is constant, there is some graph. What is this graph? Graph is tell about when the potential is there 0, then the circuit have some amount of current, as we can say that in this graph. Okay, and now further, when we increase the intensity of graph, let's say I1 intensity, when when we observe that when increasing the electric potential,
increasing the electric potential, there is increasing in the photo current. हमने क्या किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया, देन पोटेंशियल हमने क्या किया, I1 इंटेंसिटी की एक लाइट लिए, उसको मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाया, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराने के बाद हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, देयर इज इंक्रीमेंट इन करंट, बट आफ्टर सम टाइम it reached the maximum current, it reached the maximum current and giving the constant current, it will reach the maximum current and giving constant current. It means there is no such increases in frequency, what हटो सामने से, there is no such increment in current when we increase द पोटेंशियल. इट मीन्स अगर और भी आगे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो कोई भी करंट में इंक्रीमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा. इट मीन्स कि सर्किट में अभी हमारे पास सैचुरेशन करंट मिल गया है और आफ्टर दैट रीचिंग द सैचुरेशन करंट देयर इज नो इंक्रीमेंट इन करंट. नाउ नेक्स्ट वी विल टेक इंटेंसिटी I2 light, having I2 light, I2 intensity. Here we will I repeat this. Here I repeat the phenomena. When we increasing the potential, there is increment in current. There is increment in current, and after the some time they will reach at a maximum current. Okay. Now, what happen if you want to do current zero in the circuit? What happen? अगर हम ये चाहें कि सर्किट में करंट जीरो फ्लो हो, उस कंडीशन में क्या हमारे पास पोटेंशियल जीरो पे जीरो करंट मिल सकता है? लेट्स सी. नाउ फॉर डूइंग सो वी डिक्रीज द पोटेंशियल. व्हेन वी डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, इट रीच इनिशियली डिक्रीज द करंट एंड रीच अ पॉइंट विच मिनिमम पोटेंशियल. इट मीन्स हम सर्किट में क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं. पोटेंशियल को डिक्रीज करते करते माइनस V नॉट पोटेंशियल पर पहुंच गया. ओके. एंड अगेन हम I2 फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को भी जीरो करंट, I2 इंटेंसिटी वाले लाइट को भी चाहेंगे कि उसकी भी करंट जीरो हो जाए. देन इसके लिए भी हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे. जब हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, करंट डिक्रीज हो रहा है. करंट डिक्रीज होते होते हमने देखा कि दोनों ही इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है. ऐसा क्यों हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हुआ दोनों ही करंट के लिए. अब देखिए, जब भी हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं, कि इंटेंसिटी I1 की लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, इंटेंसिटी I1 लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो वहाँ पर जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो रहा है होता है, वो लिमिटेड है. अगर हमने जो I1 इंटेंसिटी में 10 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, I2 इंटेंसिटी में 20 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ. जब 5 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ तो उसके लिए भी, क्योंकि पोटेंशियल तो हमारा सेम 5, यहाँ पे ये कैथोड प्लेट एनोड प्लेट, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कुछ समय के बाद पहुँच गए एनोड प्लेट पे, एंड 10 इलेक्ट्रॉन भी पहुंच रहे हैं. लेकिन अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है. उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसको भागने की उसके पास जो ताकत है, कह सकते हैं जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, सबके पास सेम है. चाहे हम इंटेंसिटी I वाले के लिए यूज़ करें या फिर इंटेंसिटी I2 वाले के लिए यूज़ करें, सबके पास सेम है. इसीलिए I1 इंटेंसिटी वाले के लिए भी V नॉट पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड I2 इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए भी
V नॉट ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला. बट नाउ इन द सेकेंड graph there is a this is the potential, this is the photocurrent. Okay, we take a light having frequency nu1. Okay, why do we draw this type? Because when I draw this graph, we see that when we increase the potential, there is increment of current, but after some time they reach a maximum point and there is a saturation current. It reach a maximum current, no further increment in current when we increasing potential. It means कि they reach at a maximum current. Okay, now what happen if we take having frequency nu2? Okay, we will do so. It have the frequency nu2. जब हम nu2 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं, nu2 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं मेटल सरफेस पे, उस कंडीशन में हमें दिखता है कि इनिशियली तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है. आफ्टर सम टाइम में हमने देखा कि जहाँ पर जहाँ हमने nu1 फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम करंट मिली थी, वहीं पर हमें nu2 फ्रीक्वेंसी के लिए भी मैक्सिमम करंट मिली. इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि दोनों ही फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सैचुरेशन पॉइंट सेम मिला. ओके, अब अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि जीरो करंट हमें चाहिए, तो जीरो करंट करने के लिए हमें पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा. हमने स्टार्ट किया, पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट किया, डिक्रीज करके हमने माइनस न्यू फ्रीक्वेंसी कर दिया. ओके, बट व्हाट हैपन फॉर द nu2 फ्रीक्वेंसी? अगर हम अब यहाँ पर अगर nu2 फ्रीक्वेंसी है तो सभी इलेक्ट्रॉन के पास, उसके पास सपोज करते हैं nu1 फ्रीक्वेंसी के पास, nu1 फ्रीक्वेंसी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, nu2 फ्रीक्वेंसी के लिए भी 10 इलेक्ट्रॉन है. बट यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होगी और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, अब दोनों ही 10 इलेक्ट्रॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, बट एनर्जी डिफरेंट हो गई. और जब इनके पास एनर्जी डिफरेंट हो गई तो इनको ब्रेक करने के लिए, मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इन्हें रोकने के लिए हमें कुछ डिफरेंट अमाउंट की पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी. दैट्स वाई दिस इज द nu2 फ्रीक्वेंसी. फॉर द nu2 फ्रीक्वेंसी for the stopping potential V2. Okay, this is all about the photoelectric effect.